वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर बाजारों की बात करें तो आज एक बार फिर मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं हमारे देश के बाजार, क्योंकि ग्लोबल क्यूज काफी पॉजिटिव रहे और वहाँ पे जो आंकड़े आ रहे हैं अर्निंग्स के वो काफी बेहतर रहे। उसकी और जानकारी हमको विवेक देंगे। उनके साथ विवेक का मित्तल जो रिसर्च हेड है जागरण बिजनेस के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उससे पहले एक बाजार पर नजर, 40 अंक की मजबूती समय निफ्टी में देखने को मिल रही है और ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो आईटी सेक्टर में है, क्योंकि आईटी के नतीजे जो आए थे टीसीएस के बेहतर रहे। एचसीएल टेक पर मैंने निराश किया। विप्रो के गाइडेंस अच्छी है और इसके चलते हुए जो एक बहाना चाहिए था आईटी शेयर्स को मूव करने का ऑन द अपर साइड, वो हम वाज इन द प्राइस। अब जो है बिकॉज ऑफ द फेयर वैल्यूएशन हम एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट जो है वो आईटी स्टॉक्स में देख रहे हैं। इस पूरे बाजार पे कैसे रखनी होगी नजर, कौन से हैं मेजर ट्रिगर्स, आइए जानते हैं नेक्स्ट। थैंक यू मैम। और अगर हम देखें तो मैम कल अमेरिकन मार्केट्स में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दी। नरमी देखने के लिए मिली, जिसकी वजह से मार्केट में ये हुआ कि फैट की जो मीटिंग होगी उसमें शायद उतना एग्रेसिव मूव फैट की तरफ से नहीं देखने के लिए मिलेगा। कल पीपीआई का भी परचेजिंग पावर इंडेक्स भी वहां पर आया, जिसके की आंकड़े वहां भी 0.2% की तेजी देखने के लिए उम्मीद की जा रही थी, लेकिन 0.1% ही रहा, जिसकी वजह से ये अब उम्मीद पक्की हो गई है कि लगभग अब फैट की तरफ से हॉकिश स्टेटमेंट कम से कम नहीं आएंगे। साथ ही अगर देखें तो वहां पर कुछ रिजल्ट्स भी आते हुए दिखाई दिए। पेप्सी और डेल्टा एयरलाइंस के बेहतर नतीजे थे, जिसकी वजह से भी अमेरिकन मार्केट्स में तेजी थी। लेकिन वहां पर जो टेक इंडेक्स था उसमें खास तौर से ज्यादा फोकस था, क्योंकि नेस्डैक ज्यादा चला कल डाउ जोन्स से ज्यादा। तो अगर हम देखें तो गूगल का जो शेयर है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस बढ़ने से उसका शेयर तो 4% चला ही, बाकी आईटी कंपनी के भी शेयर वहां पर अच्छी तेजी दिखा रहे थे। उसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स में भी साफ तौर पर विजिबल है। साथ ही अगर देखें तो आज अमेरिका में भी कई बड़े बैंक्स के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें जीपी मॉर्गन और सिटी बैंक के नतीजे शामिल होंगे। इंपॉर्टेंट खबर चाइना से भी आ रही है। चाइना के राष्ट्रपति ने संकेत दे दिए हैं कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा और एफआई जो चले गए हैं उनको रिफॉर्म्स करने के बहाने उनको लुभाने की तैयारी की जा रही है। तो ये शायद इंडियन मार्केट के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि चाइना में एफआई का पलायन अच्छी वैल्यूएशन पर होना इंडियन मार्केट्स के लिए हमेशा से थोड़ा नेगेटिव रहा है। साथ ही अगर देखें तो क्रूड ऑयल की कीमतों में भी उछाल देखने के लिए मिला है, जिसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं बाजार में कि ओवरऑल स्ट्रेंथ मार्केट में नहीं है। भारत ने चावल एक्सपोर्ट को बैन करने की भी योजना बना रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। 80% तक जो कई तरह की वेराइटीज हैं उसमें 80% तक चावल एक्सपोर्ट बैन किया जा सकता है। भारत दुनिया का नंबर 1 चावल का एक्सपोर्टर भी है। विप्रो के नतीजे जैसा आपने बताया अनुमान से कम, लेकिन उसके बाद भी शेयर में स्ट्रेंथ लौटती दिखाई दी। लेकिन अच्छी खबर कि कल एफआईज ने दोबारा खरीदारी की है। परसों भले ही उन्होंने करीब 1200 करोड़ की सेलिंग की थी, लेकिन कल उन्होंने अच्छे से खरीदारी की, जिसका इम्पैक्ट हम ओवरऑल मार्केट में देख रहे हैं। जी चलिए, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर अम्बरीश बालेका, इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट है। वेरी गुड आफ्टरनून अम्बरीश सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। I would request you to please unmute your mic, sir. Unmuted. Thank you so much. Good afternoon. Very good afternoon, sir. अमित सर, ये बताइए कि आईटी शेयरों में जो उछाल देखने को मिल रहा है, what is it based on? I mean, नतीजे तो उतने खास नहीं आए. The worst seems to be factored in the price. So is it the valuation which is driving the stocks higher? No, I think देखिए लास्ट कई महीनों में अंडर परफॉर्मेंस देखा है आईटी स्टॉक से, और जो एक्सपेक्टेशंस है एनालिस्ट के वो भी काफी लो है। तो against expectations, if the earnings are in line, slightly better, although you may see like Q on Q or Y on Y the performance is poor, but then slightly better than market expectations. So I mean clearly we see some sort of a jump in these stocks, but I don't think कि ये last करेगा, क्योंकि over the next at least 1 or 2 quarters मुझे अभी भी लग रहा है कि the IT order flows will slow down. Although TCS ने काफी अच्छा शो दिखाया as far as order flow is concerned, but there is no confirmation कि over the next 2 quarters this will continue. तो मुझे लगता है कि we'll get opportunities possibly at slightly lower levels, क्योंकि overall market भी मुझे लग रहा है कि I mean it has reached a level where from where I think we should see a very decent correction. Valuations काफी expensive हो चुके हैं. तो against that I don't see the IT sector outperforming. So I think one should wait for a while. Possibly you should get most of the stocks at lower levels. Or I mean, if you're talking of long term as far as IT is concerned, one I mean has to be bullish, because that's been the main thing in the markets in the last 2 decades. But then
And I think next 1 or 2 quarters will give you enough chance and time to buy it at lower levels. गुड आफ्टरनून अमरीश सर। सर देखें तो हमने जिस तरह से देखा ये रैली का जो फेस होता है अक्सर बैंक और ऑटो ने लीड किया। आप मार्च अप्रैल से जब मार्केट चलना शुरू हुआ था मार्च के एंड से उसके बाद मई तक बैंक निफ्टी ने पूरा धमाल किया। उसके बाद हमने देखा कि रिलायंस ने लीड ली और रिलायंस ने जुलाई के फर्स्ट सेकंड वीक तक अच्छी कोशिश की। अब दोनों शांत हैं सर, बैंक निफ्टी भी शांत हो गया और रिलायंस भी अब शांत हो गया। कल से आईटी ने लीड पकड़ लिया। सर ये इंडेक्स मैनेजमेंट ज्यादा चल रहा है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों की शिकायतें ऐसी हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में भले ही उनके भी इंडेक्स चल गए हैं लेकिन बहुत सारे ब्रॉडर बेसिस पर शेयर नहीं चल रहे। देखिए हम लोग देख रहे हैं इट इज इन लाइक स्पेसिफिक पॉकेट्स में वी आर सीइंग लॉट ऑफ एक्शन और वहां पे काफी फ्रॉड आई मीन हो चुका है। आई मीन द वे द स्टॉक्स हैव मूव्ड अप, आई थिंक द वैल्यूएशंस हैव बिकम क्वाइट एक्सपेंसिव एंड टिपिकली व्हेन यू मेक मनी you normally I mean get a bit overconfident, and that's exactly what we are seeing across investors in the market right now. So when you have made money, you start looking at stocks where possibly I mean the valuations look cheap, basically because they are not moved. And I mean once you start investing, I mean the whole crowd starts investing in that pocket, automatically the stocks start moving up. And once you see a movement, you have speculators, short-term traders, everyone getting in. And then it becomes a virtuous cycle. And normally this is seen in most of the bull cycles, that you have a couple of pockets which move up for 2-3 months, 6 months, then they fall, quiet. You have the next pocket moving up. But then if I see overall right now, I mean, the valuations have got a tad bit expensive. I mean, 18,500, 18,800 Nifty tak valuations where, I mean, you could say were okay, slightly on the higher side, but still manageable. But 9,500 के आसपास, I think the valuations clearly are expensive looking at the sort of expected earnings for Q1. अमित सर, तो फिर आप pull down कहाँ आते देखते हैं? Because you know every sector has broadly performed except for a few like pharma and IT which had underperformed. Pharma में भी एक अच्छा मूव हमको देखने को मिल रहा है और IT हम देख रहे हैं थोड़ा उछाल आ रहा है. So अगर cool off हो जाता है market, so market में correction देखने को मिलती है. So which are the sectors that you see correcting much more than the other ones? No, I think the cool-off will be across, but then I think cool-off will be felt more in the banking space and the auto space where we have seen extremely good moves. I think along with that, we have seen metals anyway have not really performed, but metals, I think, I mean, will see a further, I mean, further cool-off. So I think these are the 2 or 3 sectors where we'll see a very decent cool-off. IT will correct, but will not correct very sharply because anyway it has underperformed. The other space which has been correcting has been the chemicals and specialty chemical space, but there again I don't see too much of a correction further from here. अमरीश सर, अगर देखें तो चाइनीज मार्केट ने अभी तक आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है सिंस 2007। अगर हम देखें तो शंघाई का जो इंडेक्स था अराउंड 6200 के लेवल्स पर था, जो उसने लेमन ब्रदर्स के फॉल से पहले हाई लगाए थे। उसके बाद से आज तक चाइनीज मार्केट उन लेवल्स को देख नहीं पाया, जबकि दुनिया भर के बाजारों ने अपने ऑल टाइम हाईज कई बार टच किया, नए नए हाईज बनाए हैं। 50% डाउन चल रहा है सर। ऐसे में चाइना के राष्ट्रपति ने कल ये माना कि उनको अब एफआईज को वापस लाने की कोशिश करनी होगी और प्राइवेट सेक्टर में उनको इन्वेस्ट करना होगा। ये कितना एक टर्न हो सकता है इंडियन इकोनॉमी के लिए कि चाइना मार्केट जहां पर एफआईज को दिख रहा है कि सस्ता है और काफी सालों से चला नहीं है, एक मार्केट जो चल रहा है काफी सालों से आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो कहां पर वो पैसा लगाना चाहेंगे सर? I think, I mean, FIs to a very large extent, they have lost faith in the Chinese markets. Although you cannot ignore, but then you can pull out investments and invest in markets which are clearly doing better. And वही हो रहा है अभी as far as Indian markets are concerned. I don't think anyone has doubt that if you're talking of the next foreseeable 4-5 years, Indian economy and Indian markets should outperform all the peers. But then Chinese markets being so large, even if it's a small percentage shift happens, uska thoda bahut effect padega hai. So I think we need to watch over the next couple of months whether FIs again go back to some extent or not.
But then I don't think we'll see the glory of the past, which I've seen in China. I think the future glory is India. Although I've been cautious, but I'm not. I'm clearly saying that I'm bearish. I'm cautious at this point of time just because of the valuations, and that too from a short to medium term perspective. If you're talking of the next 4-5 years, I don't think there's anything to worry about the Indian markets. एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर अमरदेव सिंह, हेड एडवाइजरी एट इंडियन। वेरी गुड आफ्टरनून अमर जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अमर जी, निफ्टी इज होल्डिंग क्वाइट नाइसली। आई मीन थोड़ा बहुत कूल ऑफ हम ऊपर के लेवल से देख रहे हैं, लेकिन कोई झटका अभी तक हमको एक शार्प करेक्शन का नहीं दिख रहा। और सेक्टर रोटेशन हो रही है, अब आईटी का मूव हमको बाजार में देखने को मिल रहा है। सो एज पर द करंट स्टेटस इज कंसर्न्ड, आप निफ्टी को कहाँ देखते हैं अगले आने वाले 2-4 हफ्तों के लिए? तो मैं निफ्टी की बात करूं तो ओवरऑल व्हाट वी हैव सीन इज कि जो प्रीवियस लास्ट दिसंबर का जो निफ्टी का हाई था ऑलमोस्ट 18,900 और लेवल्स 18, सो दैट वो एक बार अभी टेस्ट हुआ, फिर वहां से करेक्शन आई व्हिच वाज अगेन अ हेल्दी साइन, और इस बार जो ब्रेकआउट हुआ सो वी आर सीइंग निफ्टी ऑलमोस्ट अप बाय 600 पॉइंट्स फ्रॉम दैट लेवल। दूसरी बात क्या है कि जो लॉन्ग बिल्डअप भी हम लोगों ने देखा, और बेस्ट पार्ट इज कि इस रैली में हम लोग जो देख रहे हैं वो ब्रॉड बेस्ड रैली देखने को मिल रहा है। और यदि मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो जितने भी स्टॉक्स हैं ऑलमोस्ट 70% जो स्टॉक्स हैं दे आर ट्रेडिंग अबव द 200-day EMA, which is a very positive sign and reflects very strong bullishness in the markets. तो क्लियरली ये जो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं, दिस नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू स्टॉक्स और फ्यू हैवीवेट स्टॉक्स, इट्स अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द सेक्टर्स। और जैसा आपने अभी कहा निफ्टी आईटी में भी वी हैव सीन, नाउ वी आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ बॉटम फॉर्मेशन व्हिच हैज हैपेंड। एक मेजर करेक्शन हम लोगों ने देखा ऑन रिसेशनरी फियर्स और जो स्पेंडिंग कट्स इन द यूएस with that regard, but now we've seen that I would say caution is going away. Investors are now more comfortable with the IT stocks, and also यदि मैं बात करूं TCS के, Infosys के, they formed a very strong base. Like TCS का 3,000 is a very strong base. If you talk about Infosys 1350 and all that is a very strong base. तो क्लियरली ये दिखाता है कि इन लोगों ने एक बेस तो बनाया है और ब्रॉड बेस्ड रैली। अब मैं निफ्टी पे आऊं तो निफ्टी is trading at record highs. So when the markets trade at record highs, you actually have to be both cautious, but at the same time we've been very bullish on the markets. Because technically and the derivatives data have been clearly pointing कि आप buy side में रहो, जब भी correction आता है buying करके चलो। As far as Nifty is concerned, I would say now immediate support zone is around 19,300, 350 immediate. Short term support zone है, upside resistance around 90,580, 600. But still the favor, I would say, is in the it's in the favor of the bulls. The market is in favor of the bulls. So we've also seen some short covering. और अभी क्या होता है कि इस लेवल्स पे काफी लोग शॉर्ट में एंटर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अटकते हैं और एक रैली देखने को मिलती है। और इसके साथ जो ग्लोबल मार्केट्स में हम लोगों ने जो पॉजिटिव मूवमेंट्स देखा है, so that also has helped. But yes, US Federal Reserve could play spoilsport. That's something we'll have to watch out in when they come out with their decision or their statement. But overall, I don't see much of a concern as of now till we see the India VIX going up significantly. So India VIX is also, if you look at it, that also is in comfortable levels as of today. So very comfortable. 10-11 के बीच में है और markets are trading a record high. So investors are somewhat, I would say, there's not much fear in the markets. अभी सर रिलायंस में आप की क्या सलाह रहेगी? बिकॉज अब डीमर्जर प्रोसेस 20th जुलाई से शुरू हो जाएगा. Do you see Reliance touching a fresh new high, record high before that? No, it may not touch a record high before that. But then if you're talking of the next month and a half, 2 months, I mean, both the Reliance as well as the demerged entity, I think the valuation of both possibly will give you a new high in terms of valuation of both put together. So I think, I mean, those who are holding Reliance should hold on at least till the 20th and take the demerged shares. अमर सर, कल हमने देखा कि फेडरल बैंक के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए. रिजल्ट्स में इतना ज्यादा कुछ खराब नहीं था जितना काउंटर खराब हो गया, और काउंटर मॉर्निंग से ही खराब था. ऐसा लग रहा था जैसे काउंटर को पहले ही पता था कि रिजल्ट्स में कुछ होने वाला है. और 4% पहले डाउन था, जब रिजल्ट्स आए तो 6% हो गया. और उसको देखकर बंधन बैंक पहले ही घबरा गया, वो भी 6% टूट गया अराउंड. बंधन बैंक के हालांकि रिजल्ट्स आज हैं. अगर हम
प्राइवेट बैंक्स में देखें तो फेडरल बैंक, बंधन बैंक, जिनकी रीजनल प्रेजेंस ज्यादा है, लाइक बंधन ईस्टर्न इंडिया को ज्यादा कैटर करता है, फेडरल सदर्न पार्ट को ज्यादा कैटर करता है, इनको कंपैरिजन करें विद द नेशनल प्रेजेंस वाले बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई, एक्सिस, कैसे देख रहे हैं सर इस कंपैरिजन को? देखिए, ये सब बैंक्स को हम लोग आईसीआईसीआई और इन सब से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज उनका जो ग्लोबल प्रेजेंस है प्लस उनके जो पोर्टफोलियोज हैं, दैट्स कंप्लीटली एट अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। बट पहले फेडरल बैंक की बात करूं तो फेडरल बैंक में व्हाट वी सॉ कि एक रैली हम लोगों ने 120 से 135 के आसपास 136 देखी। बट इफ यू गो बैक इन टाइम, ज्यादा भी पीछे की मैं बात नहीं करूंगा, May 1st वीक की बात करूंगा, तो May 1st वीक में अगेन इट हैड मेड अ हाई ऑफ ऑलमोस्ट 140, और then again on 5th में there was a major correction in the stock from 140 to 127। तो कहीं ना कहीं ये डबल टॉप फॉर्मेशन, डबल टॉप तो नहीं मैं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि ये मेजर लेवल्स हैं ये फेडरल बैंक के लिए, बिकॉज फेडरल बैंक में मेजर रैली तभी आएगी यदि वो 140 145 के ऊपर सस्टेन करता है, तो नहीं तो वहां बहुत ज्यादा सेलिंग दिखवाली, सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। On the downside also, it's if you look at it, तो फेडरल बैंक somewhere around 120 का एक इसने मेजर सपोर्ट जोन बनाया, बिकॉज यदि मैं हिस्टोरिकल लेवल्स पे भी देखूं तो दिसंबर में भी इसने, दिसंबर 2022 में 121 122 और लेवल्स का इसने एक लो बनाया था, तो कहीं ना कहीं 120 140 दैट्स अ जोन फॉर फेडरल बैंक। टेक्निकली इफ यू आस्क मी, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज पॉजिटिव, बट मेजर रैली नॉट until the stock trades above 140 145। दूसरा आपने जो बंधन बैंक का कहा, इसका ट्रेंड कंप्लीटली डिफरेंट है। इसका जो ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी वो डाउन का है। मतलब क्या है, हायर लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर है। इसने अभी रिसेंटली एक हाई बनाया था 260 का, उसके बाद अभी करंटली इट्स अराउंड 217। तो मोर और लेस द ट्रेंड इज नॉट इज वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का जहां लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप है, बंधन बैंक का भी स्टिल सीइंग दैट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज डाउन, इसलिए एक करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। On the downside, however, 180 200 that's the zone of strong support for the bank। यदि इसे historical levels पे भी देखें तो almost मतलब ये crucial zone है 180 से 200 का level for बंधन। अमरीश सर, अगर हम देखें तो रिजल्ट्स अब पूरी स्ट्रीम पर आते जा रहे हैं। आईटी ने एक तरफ से सपोर्ट दे दिया, 2 दिन में करीब 1300 से 1400 पॉइंट की रिकवरी आती हुई दिखाई दी। बैंक निफ्टी में अभी फेडरल के ही रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है बैंकिंग सेक्टर में। सर, आपको कहाँ लगता है कि आने वाले कुछ दिन में कहाँ सबसे तेज प्रॉफिट बुकिंग होगी, भले ही रिजल्ट्स अच्छे हो जैसा हम बैंकिंग में देख रहे हैं, और कहाँ पर ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स अगर खराब भी हो या थोड़ा डाउन भी, थोड़ा सा भी साइडवेज भी हो, तो भी वहां पर बाइंग देखने के लिए मिलेगी? देखिए, जहाँ पे करेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैंने पहले भी कहा था, आई थिंक द ऑटो स्पेस, जहाँ पे रिजल्ट्स आने के बाद आई थिंक वी कुड सी सम करेक्शन, बिकॉज वी कुड सी टॉप लाइन ग्रोथ, पर शायद जो बॉटम लाइन मार्जिन्स है that cannot keep pace in this quarter. So I think we could see some correction in the auto space. जी। अब सर, जेबीएम ऑटो आज करीबन 14% का गेन हमको इस स्टॉक में देखने को मिला बिकॉज ऑफ द ऑर्डर दैट दे हैव बैक्ड फॉर ईवी बसेस। लेकिन ऑटो एंसिलरी स्पेस हैज बीन बजिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। यहाँ पे आपको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा हो अभी भी इन लेवल्स पे, एंड यू हैव टू कीप इन माइंड दैट अर्निंग्स आना शुरू हो चुके हैं। ऑटो एंसिलरी में काफी स्टॉक्स हैं विच आई लाइक, एंड वन ऑफ देम इज जमुना ऑटो, जो मार्केट लीडर है ऑटोमोटिव सस्पेंशन सॉल्यूशंस पे, एंड दे आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ऑफ मल्टी लीफ स्प्रिंग्स। करीब उनका 68% मार्केट शेयर है, विच इज व्हाट वन शुड रियली लुक एट, क्योंकि टाटा मोटर्स का 70% ऑफ द रिक्वायरमेंट इज सप्लाइड बाय देम, अशोक लेलैंड का 90% ऑफ द रिक्वायरमेंट इज सप्लाइड बाय देम, सो दैट मेक्स देम अ वेरी की प्लेयर। And they're also, I mean, they're in the EV commercial vehicle. I mean, वहाँ पे जो technology transfer हो रहा है from a foreign partner, that will help them, I mean, going ahead as far as the EV space is concerned. So, I mean, here I have a price target of 130. Since I'm not too bullish on the markets in the short to medium term, यहाँ पे I'm taking a short-term target of 130, which is about close to say 15 to 18% return for the current levels. अमर सर, आपको जेबीएम ऑटो कैसा लगता है और ऑटो एंसिलरी स्पेस पे क्या पसंद? तो जेबीएम ऑटो ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, इसने तो बहुत सिग्निफिकेंट रैली
की है। एक मेजर इसका एक रेजिस्टेंस जोन 800 का था। एक बार इसने उस लेवल को क्रॉस किया, that was on 6th of June, so it's not very far, and currently it's almost 1460. So it has been a spectacular rally, but at current levels I wouldn't recommend. I would at least a fresh buy. Yeah, those who have the position, they could look at booking profits. As far as support is concerned, some strong support for the stock is around 1200, 1250. So. अभी सर कल एक न्यूज ये भी आ रही थी कि इंडिया में बैन राइस एक्सपोर्ट, इसमें इंडिया नंबर 1 एक्सपोर्टर भी है दुनिया में। तो डू यू सी कि जिस तरह से एक इन्फ्लेशन में कंफर्ट मिल रहा है अब यूरोपियन देशों को या अमेरिका को, ये दोबारा से कंफर्ट भारत छीनने जा रहे हैं? I think more than that, I think it will be negative for the Indian rice exporters, क्योंकि उनका margins तो वहीं पे बनते थे। I think with this ban, they would suffer to a certain extent. Although this ban is not there on the basmati sort of rice, but then it is there on the rest of it. So I think to a certain extent it will affect the margins. जी अमर सर, अगर देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनमें एक अच्छा ट्रैक्शन था क्योंकि लास्ट क्वार्टर में तो इनके रिजल्ट सभी के अच्छे आते हैं। जनवरी मार्च क्वार्टर इनका सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है। अब इनके भी रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। किसी पर्टिकुलर काउंटर पर आप बैट कर रहे हैं लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर? देखिए, इसमें HDFC लाइफ की मैं बात करूं तो HDFC लाइफ इज वन स्टॉक which is very strong and promising on the long term charts also. और इसमें हम लोगों ने एक अच्छी रैली भी देखी है from almost recently 450 to 660, 650 odd level. So ये एक स्टॉक है, इसको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली वन कैन लुक एट द स्टॉक ऑन एनी करेक्शन। नाउ द स्टॉक हैज गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समवेयर अराउंड 600 odd levels. तो ये एक स्टॉक है जिसे मतलब लॉन्ग टर्म पोजीशन पर्सपेक्टिव से इसे देख सकते हैं। और दूसरा मैं यदि देखूं तो SBI लाइफ है, वो बट दैट्स ऑलरेडी ट्रेडिंग एट इट्स रिकॉर्ड लेवल्स। तो यहाँ इस लेवल पे फ्रेश एंट्री इज नॉट रिकमेंडेड, but again this is again if we see some significant correction in the stock, then survival, but HDFC life insurance is a better option. अमृतसर मैरिको ने कहा कि वो अपने जो मार्जिन्स है उन्हें 200 से 250 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट दिखती है एज इन्फ्लेशन कूल्स ऑफ। FMCG स्पेस में आपको क्या पसंद है? क्या आपको लगता है दिस इज द राइट टाइम टू रियली accumulate good quality stocks? We have seen a very nice and strong move in companies like ITC, HUL. So other than ITC, HUL, in fact, I'm looking at stocks like Dabur, Jyoti Labs, because these are the ones which can do well going ahead because of the possible margin expansion. क्योंकि जो इनके input costs है वो कम हो रहे हैं compared to, if you're talking of the last 3 to 4 quarters, compared to that it has come down, whereas the final retail price will not really come down in the same lines. So I think margins will clearly improve for these. So Dabur and Jyoti Labs is the other two picks for me. अमर सर, IT स्टॉक्स में क्या पसंद है आपको? एम्फेसिस ने काफी अच्छा मूव आज किया है, करीबन 4.5% का इजाफा अभी भी स्टॉक में देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस, HCL टेक, TCS, क्या लेंगे आप इस समय? मिड कैप पे ध्यान देंगे या फिर लार्ज कैप्स भी आपको अच्छे लगे? I would say कि large cap is also good. If I look at from a large cap perspective, TCS is definitely one should have in one's portfolio because ये आपको slow and steady sort of ये है stock है, but it's very good from a long term perspective. दूसरा emphasis जो आपने कहा, that also is looking good on the charts because इसमें हम लोग एक breakout, we are seeing a breakout in the stock and also some decent volumes. But इसमें यदि मैं थोड़ा सा long term जाके देखूं तो somewhere or the other it has got some resistance around this 2030-2050 band. So ये एक zone of resistance है जहाँ some profit booking will also step in because this stock, if you see from it has been in a very consolidated zone, 1800, 2000, that's the range this stock has been trading and it's formed a very strong base. So कहीं ना कहीं there is a possibility that the stock could trigger and move upside because there is significant upside to the stock, but उसके लिए stock को मैं 2050 से 2100 का एक जोन दूंगा, दैट्स अ जोन ऑफ रेजिस्टेंस। उसके ऊपर ही सस्टेन करता है, देन वी कैन सी सम सिग्निफिकेंट रैली इन दिस स्टॉक टुवर्ड्स 2400, 2500।
जी सर, क्रूड ऑयल में भी साइलेंटली एक अच्छी तेजी दिखाई दे रही है, $70 से $81 आ चुका है। सर, ये कोई कॉज ऑफ ए कंसर्न तो नहीं है? अमेरिकन इकोनॉमी में सुधार के संकेत हैं, चाइना अपने पर फोकस कर रहे हैं? No, I mean this will be a cause of concern यदि यहाँ से भी और ऊपर जाता है and we see it crossing $88-90, I think then it will start having an effect on the economy as well as the markets. पर up to $85 to $90 तक उतना issue नहीं है, but if it crosses 90, I think it will have an effect. अमर सर, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता, इन दो काउंटर पर मैं आपका व्यू चाहता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के रिजल्ट्स हैं नेक्स्ट वीक में और जनरली ये अच्छा डिविडेंड देती है और ये डिविडेंड वेदांता को पास होता है एंड देन इवेंचुअली वेदांता अच्छा डिविडेंड देती है। सर, दोनों काउंटर पर आपका व्यू? तो यदि मैं हिंदुस्तान जिंक की बात करूं, पहले तो हिंदुस्तान जिंक में वी हैव सीन सम गुड रैली रिसेंटली बिकॉज ये 300 यदि मैं देखो तो 300-310 के लेवल्स को ये स्टॉक रीच नहीं कर पा रहा था, बट ओवरऑल आई वुड से currently it's around 327 odd levels, so 340, 360, that's a very strong zone of resistance for the stock. और यदि मैं मंथली चार्ट्स में भी देखूं तो इट इज क्लियरली इन अ ट्रेंडलेस जोन, मतलब ये साइडवेज स्टॉक में कुछ वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, बट इट्स वेरी गुड फ्रॉम अ रेंज प्ले। तो ये स्टॉक में आप ये समझ सकते हैं 300 on the downside, 350, 360 on the upside, that's a very strong. So towards 350 and all that, one can look at booking profits. Again, ये नीचे आता है तो you can buy around these levels. And talking about the other stock which you mentioned, Vedanta, यदि मैं Vedanta की बात करूं, तो Vedanta, what we are seeing here is that the stock is trying to move up, but what we've seen is somewhere around 285. 285 is a zone. Currently, it's around 281, not much from that 285 level. But 285 to 290, that's a zone of resistance. Technically, I would say there's not much in the stock. Again, it's a complete range play. Upside B seems to be capped. But if the stock sustains above 300 level, then we could see an 8 to 10% rally in the stock. Otherwise, the stock is, in terms of technical patterns, it's similar to what we saw in Hindustan Zinc. On the downside, yes, the stock has got very strong base around Vedanta around 260. So 260, 300, that's a zone for Vedanta. Any major rally only above 300. अमित सर, आपने कोई लिस्ट बना रखी है स्टॉक्स की जहां पे आप हो सकता है कि करेक्शन के इंतजार हो और करेक्शन आ जाए और आप वो खरीद लें? Yeah, I mean clearly the list of stocks is there और इसमें काफी stocks है जो ऑटो में है, although I've told you to correct, but once it corrects, I think from a longer term perspective should be bought. Stocks like Mahindra & Mahindra, Maruti, Ashok Leyland, Tata Motors. Again, Tata Motors, I'm waiting for at least a 15% sort of a correction from here to start buying. At the same time, specialty chemicals में भी काफी मेरे picks है. For example, Deepak Nitrite, which has corrected decently well, Lakshmi Organics, which has underperformed in the recent past also. So these are the sort of picks which I have. And other than that, in pharma, मुझे लगता है कि that could be a dark horse. Already we have seen some decent performance in the recent past, but I think this is just the beginning. And I think stocks like Lupin, we should see levels of about 1200 to 1300 levels. Stocks like Sun Pharma, we should see another at least 15-20% move from here. अमर सर, आपके रडार पे कौन से शेयर? One can look at again Tata Motors is one good stock which one can definitely look at because we've been positive in that stock. The stock we've seen this significant rally happening. So this is one stock one can definitely look at, and in the pharma space, Aurobindo Pharma is one stock one can look at this stock also. But इसमें we've seen a significant rally, almost 100% rally we've seen in the stock. But any significant correction in the stock towards currently it's around 740, ideally somewhere around 680, 690. That's a good level to look at this stock. Amar sir, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. Thank you so much, Amrit sir, for being with us. It's always a pleasure to host you guys on this platform. विवेक, आपका भी बहुत शुक्रिया. सोमवार को मुलाकात होगी. अभी के लिए Thank you so much for watching.